A very good question based on concept of averages. The question I named this question is average when an unknown number is deleted. The question is there are certain number of consecutive natural numbers written on a blackboard. If one of them is erased, then the average of the remaining numbers is 32 7 by 24 in mixed fraction. Now we need to find the number that was erased. Now see, कहां से स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने चाहिए. तो व्हाट इज एवरेज फर्स्ट ऑफ ऑल? सो व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड दैट आर consecutive natural numbers basically, तो देखते हैं एवरेज क्या होता है. नाउ सपोज द नंबर्स आर 1 2 3, तो एवरेज इज 2. Now suppose the number are 1 2 3 4, so the average is mid value again, but now we have even number of values, so the average will be basically the mid value between 2 and 3, that is 2.5. Now suppose the numbers are 1, 2, 3, 4, 5. Average is again the mid value. Suppose the number are 1, 2, 3, 4, 5, 6. The average will be the mid value again. Now we have even numbers. So the mid value of these two numbers is 3.5. So first of all, हमें average का idea होना चाहिए. Average is generally whenever the numbers are consecutive or they are following an AP arithmetic progression, then average is always the mid value. In case of odd number, we'll have a definite mid value. In case of even number, हमें find करना पड़ेगा, that will be in points generally, right? So first concept. इस concept को use करके can we say that the number is 32 point something? So can we assume that this is the average given to us? So can we assume that this must be the mid value of the numbers given to us, right? तो हो सकता है 32 point something है. So हो सकता है जो average रहा हो वो 32 रहा हो या वो 33 रहा हो या इनके बीच का कुछ रहा हो. But anyways, now we have an idea कि this 32 or 33 must be the mid value of the numbers, right? That was the first hint given to us. Secondly, now we are dividing here by 24. We are dividing here by 24. Just a second. Just a second. Yeah. So we are dividing here by 24. And this is when we have erased one number. So initially the number of numbers must have been 25. We can say this. हमने एक number erase किया है. उसके बाद to find the average we are dividing the numbers by 24. So that implies that initially there were 25 numbers. So we have two cases. We can take two cases basically. So if we assume the average to be 32, so initially we had 25 numbers. So this is the mid number. So 12 numbers to right of 32 and 12 numbers to left of 32. तो यहां पर हम यदि ऐड करें तो विल मूव टिल 44. और यदि हम पीछे से देखें तो 20 से लेकर 31 तक वी हैव 12 नंबर. सो द नंबर्स मस्ट हैव बीन दीज ओनली 20 से लेकर 44 तक. नाउ दीज आर 25 नंबर्स, राइट? और जो एवरेज है 32 रहा होगा. पर आप कह सकते हैं कि सर 33 भी तो ले सकते थे. तो नो इश्यूज. लेट अस हैव अ सेकंड केस वेयर द एवरेज इज 33. अगेन 12 number, since this is the mid number, so 12 numbers to the right of 33 and 12 to the left of 33. So here we'll start from 21 and then we'll go till 45. So इन दोनों में से कोई केस हो सकता है, right? Now let us first of all find the total of all these numbers. So for finding the total of all these numbers, we can simply use the formula n into n plus 1 by 2. I hope you must be knowing this formula. और यदि आपको नहीं आता, you can directly use the formula for AP also. आप कर सकते हैं, right? So if we calculate this, so we are getting how much? This is 990. Fine. But ये formula तब applicable होता है when we are counting the numbers from 1. पर हमने तो 20 से count किया है. So let us do one thing. इसमें से हम summation of 19 तक का numbers हम minus कर देते हैं. Because this formula is applicable only when we are starting the counting from 1. तो यदि हम 1 से 44 तक काउंट करते तो ये 990 सम होता. दिस इज द फॉर्मूला. मैं आपको नोट भी करवा देता हूं. So whenever we need to calculate this sum 1 plus 2 plus 3 and so on till n, so the formula used is n into n plus 1 by 2. Now the condition over here is the number should start with 1. But यहाँ तो 44 से स्टार्ट था. तो हमने क्या किया, मैं इसको एक बार और लिखता हूं. What I have done is I have assumed that the numbers are starting from 1. मैंने 1 से assume कर लिया. तो 1 से लेकर 19 ये जबरदस्ती मैंने ऐड किया है दिस पार्ट.
Now I can directly use the formula n into n plus 1 by 2. But in this formula, this was additionally added, right? This was not in the question. So we need to subtract this. 19 into 20 by 2. So out of 990, I need to subtract 190. So the sum comes out to be 800. Right? और यदि हम सेकंड केस अज्यूम करते हैं तो इसमें वी नीड टू ऐड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. नाउ ये क्वेश्चन में गिवन नहीं, जबरदस्ती ऐड कर रहे हैं तो इन्हें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. सो नाउ आई कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला 45 into 46 by 2 minus 20 into 21 by 2. Now this is 23. Now 900 and 135 is 1035 and minus 210. So this becomes 825. तो यहाँ पर हमारा 800 आ रहा है, यहाँ पे हमारा 825 आ रहा है. अभी तक हम श्योर नहीं है कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है. लेट अस डू वन थिंग. Let us find the total of this number. ये कितना है? Now 32 into 24 is I think 768 plus 7 by 24. तो ये हो रहा है 775 by 24. तो बेसिकली जब हमने एक नंबर को इरेज कर दिया था तो हमारा टोटल 775 बचना चाहिए था. Now here we are having the total to be 800. हमको कितना कम करना है 775 लाने के लिए? We need to erase 25. Yes, 25 is present. यहाँ पर 25 डेफिनेटली प्रेजेंट रहा होगा. तो हमें 25 उस नंबर जो इरेज किया गया वो नंबर 25 था. अब जैसे 25 को इरेज किया गया टोटल कितना रह गया 775 क्योंकि 800 था उसमें से 25 कैंसिल हो गया 775 and the number of numbers are 24. So the average becomes 775 divided by 24, that is nothing but 32 by 24, right? But आप कहेंगे कि सर ये केस भी हो सकता है, तो लेट अस चेक. हमें 825 को 775 बनाने के लिए we need to subtract 50. But then 50 is not available in the range that we have taken. We have taken the numbers from 21 to 45. 50 is not present. How can we subtract 50 from that? So from here, we can say that this is definitely not the case. This is the correct answer. So the numbers that we have taken initially were numbers from 20 to 44. The erased number was 25. So इसमें हमने समेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया, इसमें हमने एवरेजेस का कॉन्सेप्ट यूज किया. बच्चों एक बात जो मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, हिंट क्वेश्चन में होता है. ये हिंट हमें क्वेश्चन से ही मिला. how we have taken 25 numbers only, how we have assumed the average to be 32 or 33 only. so ये चीजें आपको क्वेश्चन से समझनी पड़ेंगी. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा. थैंक यू.